It's being called the greatest beyond visual range या BVR battle of all time. पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 7 मई की सुबह को जो झड़प हुई, झड़प कह सकते हैं इसे या नहीं कह सकते, वो हमें देखना पड़ेगा। मगर पाकिस्तान ने कम से कम दावा किया 5 हिंदुस्तानी जहाज गिराने का। उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खबरें आना शुरू हुई कि एक राफेल गिरा। पहले फ्रेंच ने CNN को कंफर्म किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन ने कंफर्म किया एटलीस्ट 2 गिरे हैं, और अब आके लग रहा है कि कम से कम 3 राफेल गिरने का खदशा है। खदशा क्यों है? क्योंकि हिंदुस्तान से कोई जवाब नहीं आया, कोई कंफर्मेशन नहीं आई उनकी तरफ से कि उनके कितने जहाज गिरे। वो सब कह रहे हैं मगर कि हमारे पायलट बच के वापस आ गए। हकीकत क्या है, मिथ क्या है, क्या हुआ? और अब तो हर अखबार कह रहा है चाइनीज वेपन्स पास कॉम्बैट टेस्ट इन इंडिया पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। ये खबर आई है फ्रांस 24 के ऊपर। इसके ऊपर और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिराज के साबिक पायलट, स्क्वाड्रन लीडर, राइट, फहद मसूद, Correct. रिटायर्ड। और लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट फहद, क्या हुआ 7 मई की सुबह को? So this takes us back to पहलगाम। मेरे ख्याल में वहां से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। समथिंग दैट वाज मेंशन्ड कि हमें the Pakistan occupied or Pakistan independent Kashmir on the Azad Kashmir people went across, and some Mujahideen or some freedom fighters or terrorists as they call them went across and hit a tourist spot. Since then, कहते ना कि the boil was on, or finally on the 7th and the night before that, the initiation took place from the eastern border. Indians attacked with limited firepower initially, or as per them, they hit the terrorist camps or training camps within various places in Pakistan. The biggest challenge जो इस पूरे सिचुएशन में पड़ गया वो previously 2019 में it was only the LOC. But this time across they went around the international border. और जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर ब्रीच होता है किसी कंट्री का, एज पर इंटरनेशनल लॉ द कंट्री रिजर्व्स इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड in kind in this case. So जैसे ही वो ऑफेंसिव लॉन्च करते हैं, द होल ऑफ द एयरफोर्स इज वेटिंग फॉर इट टू सबसाइड। वो मिसाइल अटैक जो उनका होता है वो सबसाइड करता है, एंड देन आर एयरक्राफ्ट गेट एयरबोर्न फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। वेरियस एयरक्राफ्ट, इफ आई वर टू से anything that was airworthy was flying at that time within Pakistan. So the fighter element was airborne, the EW element was airborne, the AWACS element, the transport element, anything that was there. So Srinagar is attacked as a counter-offensive. Avantipura specifically, which is their Air Force station in Srinagar, one of their brigade headquarters gets attacked in the process as well. This is a missile attack again. Some say it's a standoff weapon capability from Mirages and REKs from JF-17. So यहाँ पे now the two air forces come head to head with a variety of aircrafts. On one side, the Pakistani side, you have the J10C, you have the F-16, you have the JF-17 Block 3, which are airborne and are integrated data linked with the AWACS AEW platform, and they're doing their bit, staying inside their boundary. On the other hand, we have the Indian element, Air Force element, airborne, and now they are Su-30s, MiG-29s, as well as the Rafales with the Meteor on board. So इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो फाइट ऑफ द BVR है ना, वो दोनों साइड पे PL-15 on the J10 एंड द मीटियोर ऑन दी राफेल, ये बहुत अरसे से एक डिस्कशन चल रही थी ऑन पेपर कि ये क्या होगा और किस तरह एक दूसरे को ये निगेट करेंगे, या दे विल बी एबल टू गेट इनटू द नो एस्केप जोन ऑफ द अदर BVR.
So झड़प जैसे आपने कहा, that gets initiated. Both aircrafts are looking at each other with their ESA radars and the integrated AWACS as well. एक कॉन्सेप्ट है जिसको पहले काफी दफा ब्रीच किया है, इसको कहते हैं लॉन्ग स्टिक. सो द लॉन्ग स्टिक कॉन्सेप्ट स्टेट्स कि जो BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, हाउ फार कैन इट एंगेज अ टारगेट. फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट साइट, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी किसके पास है. सो इन दिस डोमेन what happened was a mix of a few things. The EW element was in place, electronic warfare, ECM, ECCM was in place on both sides of the border. We had, and this is the LOC, not the border, we're in Kashmir right now. और दूसरी साइड पे भी ऐसा ही है. लेकिन जहां पे इस चीज पूरे एयर कॉम्बैट को देखा जाए तो इट वाज अबाउट 55 minutes to an hour of BVR combat. Never in the history has this happened since World War II कि इतना prolonged engagement हुआ है. I would not call this a dogfight, but I would certainly call this an engagement. जिसमें there are a lot of cold and hot flows, there are a lot of anchoring, there is a lot of posturing in the process. So वो कहते हैं ना, जो जिसके पीछे पड़ जाए तो उसके बाद शॉट ले लेता है, वो पीछे पड़ने वाला चक्कर सारा इन हाउ डिड दैट वर्क अराउंड इस टैक्टिक्स. But the scenario that broached in the end and how it resolved or got resolved in the process was there were no shots or no hits taken by the Pakistan Air Force. I can say that with credibility. But on the other side, there are 5, 6 now, and 7 now for that matter, which have been recently taken up. But that first night was 5. So it included the Su-30, it included the engagement-wise the Rafale and the MiG-29. So Rafale का count जो आपने कहा वो बिल्कुल वैसा ही है. It is the 3 aircraft in initial, and अगर मैं कहूँ कि J10 का BVR plus the EW that was there was the differentiating factor between the two sides. अब इसमें ranges क्या हैं या किस डिस्टेंस पे मिसाइल एंगेज हुआ है, अच्छा, मैं एक्टिव हुआ यहाँ पे है. थोड़ा यस. इंटरजेक्ट करूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं और हमारे व्यूअर्स को शायद समझने के लिए थोड़ा सा इसको थोड़ा डिस्टिल करना हो. पहले तो थोड़ी क्लैरिफिकेशन. ये जो हमला हुआ था पहलगाम के अंदर 22 अप्रैल को, इसको हिंदुस्तान कह रहा है कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट किया था. पाकिस्तान ने इसकी कंप्लीट डिनायल की. पाकिस्तान ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन मांगी, जो हिंदुस्तान ने करने से इनकार किया, और फिर बिल्डअप हुआ, और फिर ये हमला जाके हुआ पहले हिंदुस्तान ने, जिस तरह आपने जिक्र किया, और ये सब कुछ. जब बैटल की बात करते हैं और बीवीआर की बात करते हैं, तो ये जो बीवीआर मिसाइल PL-15 मेरे ख्याल से इसकी बात हो रही है, इसके 2 वर्जन बताए जा रहे हैं. एक बताया जा रहा है कि जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी 150 किलोमीटर आउट ऑफ साइट, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बेसिकली टारगेटिंग कैपेसिटी है. जो डोमेस्टिक वर्जन है उसकी तकरीबन 300 किलोमीटर है. मगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो फाइटर जेट्स के ऊपर माउंटेड थे, अब एवैक्स और जो रेडार प्लेन्स हैं, जो वो भी हवा में उस वक्त थे, और उन्होंने इंटीग्रेट होके सिस्टम इंटीग्रेशन के जरिए J10s को कैपेसिटी दी कि वो 300-400 किलोमीटर हिंदुस्तान के अंदर मॉनिटर कर सकें कि उनके जहाज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे. तो एक पूरा एक कॉम्बाइन कॉम्बो बन गया. मोर इंपॉर्टेंटली, ये जो आपने बात की कि ये सबसे ये इस सदी की सबसे इंटेंस और सबसे लंबी बीवीआर थी, तो ये भी कहा जा रहा है कि मुजफ्फराबाद से लेकर सियालकोट तक ये चल रहा था पूरा आमने सामने. 78 एयरक्राफ्ट इंडिया के थे और 47 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के फेस ऑफ कर रहे थे. तो दैट इज करेक्ट. जो एक दो चीजें जो आपने बिल्कुल ठीक जिक्र की कि दी battle arena was relatively congested and a lot more populated. The number of aircrafts exactly, I cannot give you a specific which you've mentioned, but I can certainly tell you it was around 100 aircraft within the area of both Sialkot working boundary and the LOC Muzaffarabad into the north. Um,
अब इसमें इंटीग्रेशन या जो PL-15 के 2 वर्जन की आप बात कर रहे हैं, जो बीवीआर है वो बीवीआर की एंगेजमेंट काफी सारे वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके रेंज या उसके एंगेजमेंट कैपेबिलिटी, बहुत सारे वेरिएबल्स। एक वेरिएबल की मैं जरूर बात करूंगा इधर, विच इज द ऑल्टीट्यूड ब्रैकेट। वी कॉल इट द ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, मीनिंग देयर बाय 10, 20, 30 एंड 40,000 फीट के किस ऑल्टीट्यूड से आप वेपन एम्प्लॉय कर रहे हैं, वन, और आपको जो एडवर्सरी है, जो बोगी है, वो किस ऑल्टीट्यूड ब्रैकेट पे है। तो ये दो वेरिएबल्स तो सीधे सीधे हैं। इसके अलावा डायनामिक लॉन्च जोन, स्पीड, एंगल, एस्पेक्ट्स, काफी सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन रेंजी शॉट्स बिल्कुल हैं। देर आर मतलब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि 98 नॉटिकल माइल्स पे J10 की शॉट है। हो सकती है, मैं ये नहीं कहता नहीं हो सकती। और आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि हमारे पास जो PL-15 फॉर दिस कॉन्फ्लिक्ट आए हैं दे आर नॉट द एक्सपोर्ट वर्जन्स, वो पहले आए थे हमारे पास, लेकिन जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं दे आर प्रोबेबली द वंस दैट वर फ्रॉम द स्टॉक पाइल ऑफ द चाइनीज एयरफोर्स। उन्होंने अपने स्टॉक पाइल में से हमें प्रोवाइड किए ये वाले वेपन्स, सो दैट वी could engage using data link capability of the AEW with the J10 as a node and the AVAX as the nerve center to engage a rangy shot. Agreed. इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, क्या ये चीज ऑन द अदर साइड अवेलेबल नहीं थी? दैट्स अनदर एस्पेक्ट। हम तो कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान वाली बट साइड पे, इंटरेस्टिंग, क्या इसके ऊपर उस ये साइड पे? आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा है। सुनते हैं पाकिस्तान के एवीएम औरंगजेब बड़े मशहूर हुए हैं, उनसे पूछा गया कि राफेल की कैपेबिलिटी क्या इतनी अच्छी है कि नहीं है, उनका जवाब सुने। It's not the fact that the Rafale is a bad plane. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well, but it's how you're, with all in all fairness and jokes aside, it's all the training. I think it's the, as mentioned, the direction, the leadership that propels you in that direction, gives you confidence, and the support of the nation. एवीएम औरंगजेब और ये कह रहे थे कि राफेल इज अ ग्रेट प्लेन, बट उसको चलाया किस तरह जाता है, मनूवर कौन कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और ये आपके इनिशियली जो आप इंप्लाई कर रहे थे कि भाई पाकिस्तान ने तो बीवीआर मारे, वहां से भी बीवीआर चले, तो पाकिस्तानी जहाज नीचे नहीं गया, उनके राफेल कैसे नीचे चले गए? बिल्कुल। सो इसमें वहीं दोबारा ले जाता हूँ बात को, जो इंटीग्रेशन है ना ऑफ द फाइटर एलिमेंट विद द EW एंड द AWACS, वो कॉम्बो जो आपने जिक्र किया, वो जो टीम है वो डिटरमिन करती है द विन और द लूज। उसमें एक चीज जो एवीएम औरंगजेब ने भी जिक्र किया specifically the aircraft is very potent an aircraft, completely agreed. It is a battle tested, it has flown across the world, has many different operators, lekin the gun matters, the man behind the gun matters more. ये एक देयर इज नो ग्रेटर ट्रूथ। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि they were not good. We would certainly say we were better in that integrated airspace. We had the better at the day. We were more network centric, एक phrase है. We were more connected within the elements that we had. So all said and done, ये Indian Air Force is a professional Air Force. I stand by that statement. But what we need to understand is कि स्पेस एंड टाइम में कौन सा जहाज किधर क्या कर रहा है और क्या कैपेबिलिटी रखता है, वो चीज समझना जरूरी है। और इन दैट लिमिटेड स्पेस जो LOC और LOC के अक्रॉस हुआ और वर्किंग बाउंड्री के अक्रॉस हुआ, उसके अंदर वी हैड द बेटर ऑफ द डे।
And the reason, I'll give you one statement: success is when opportunity meets luck. सो अपॉर्चुनिटी आपके पास होनी चाहिए है, लक आपके पास होनी चाहिए, प्रेपरेशन आपके पास होनी चाहिए. ओनली देन सक्सेस कम्स अक्रॉस to you as an element. So these are variables that come into play, and I believe the both sides, the strategic and the policy level of both sides, are looking at this as a case study. How why things went right and how and why things went wrong. And I certainly believe top guns across the world, combat commander schools across the world, tag Ds across the world will take this one skirmish as a case study for a long time to come. अच्छा, यहाँ पे दो तीन चीजों का आपने जिक्र किया है. एक कॉम्बो का जिक्र किया, लक और अपॉर्चुनिटी कंबाइनिंग फॉर सक्सेस का जिक्र किया. मगर चाइनीज टेक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसको आप ईडब्ल्यू कह रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उसका एलिमेंट, और स्पेशली हम जब बात करते हैं किसी भी जहाज की और मॉडर्न फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात करते हैं, तो वो एक पाकिस्तानी J-17 या J-10 से जंप किस तरह करता है. वो करता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर. फॉर एग्जांपल, किस तरीके से वो अपने आप को हाइड कर सकता है रेडार के अंदर. तो उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉनिक इनविजिबल शील्ड होती है बेसिकली. और ये भी कहा जा रहा है कि चाइना की जो इंटीग्रेशन हुई है सैटेलाइट्स के साथ, उनके अपनी जो पूरा ये पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स को एक तरीके से चाइनीज डिफेंसेस के साथ इंटीग्रेट किया है, दे वर एबल टू हैक इनटू द राफेल्स जो शील्ड थी उसकी इलेक्ट्रॉनिक, उसको. इसमें कितनी वजाहत है? इसको थोड़ा सा बड़े पैमाने पे देखते हैं. हमने चाइनीज के साथ बहुत सारी एक्सरसाइजेस की हैं, जो शाहीन कैटेगरी या शाहीन ड्राइव की एक्सरसाइजेस हम कहते हैं उनको. आई थिंक वी डन 14 राइट नाउ, इफ नॉट मोर. उसके अंदर सिर्फ एक चीज प्लान की जा रही थी और यूटिलाइज की जा रही थी, वो इंटरऑपरेबिलिटी है. कि हाउ डज द सिस्टम, which is the Chinese and the Air Force, Pakistan Air Force system, as well as the people or the nodes or the pilots, as well as the nerve centers, integrate together to become a single whole. अब इसमें जो राफेल का सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्वीट. It's got capability to hold its own in various electromagnetic multispectral operations. लेकिन इस रात को जो हुआ, which designated the path of the next 4 days of war, was never seen before. The Rafale had never been hit this hard on the electromagnetic spectrum. इसमें एलिंट इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, इसमें सिजेंट सिग्नल्स इंटेलिजेंस, इसके अंदर ECM, ECCM, so many different EW capabilities were utilized कि जो उनकी डेटा इंटीग्रेशन या विजिबिलिटी कैपेबिलिटी थी, दैट वाज हैम्पर्ड टू बियॉन्ड व्हाट वाज सीन एवर सीन बिफोर. सो द चाइनीज टेक्नोलॉजी की जो खूबसूरती इस पूरी सिचुएशन में आई है, वो लॉन्ग स्टिक, जैसे पहले जिक्र किया, और द इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क सेंट्रिसिटी कंसिडरिंग वेरियस एलिमेंट्स इन द एयर एंड दैट पॉइंट इन टाइम. सैट इज वन थिंग जिस पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट एन एस्ट्रोनॉट, आई एम अ फाइटर पायलट बाय प्रोफेशन. लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बेइडू का जो सैटकॉम और सैटेलाइट सिस्टम है, it is better than GPS right now. It has, if I'm not wrong, 44 satellites in the air at one time. This is what Parveen Suhani also mentioned in his talk. And on the other hand, GPS 16 at one time, sats across the world, 24 in total as backup. So yes, I would take that with a pinch of salt, understanding that could have been
a game changer, if not a big element in the whole gambit of operations. अच्छा, दो सवाल बड़े अहम है मेरे दिमाग में. एक तो है कि द स्टॉक मार्केट और जो चेंगडू की स्टॉक्स हैव गॉन अप बाय 60%. दूसरी जानब डसॉल्ट जो राफेल बनाता है उसके स्टॉक्स नीचे गिरे हैं. तो ये अब किस तरीके से प्ले आउट हो रहा है? तो बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंटल डीप सीक मोमेंट कह रहे हैं इसे, बिल्कुल. वॉरफेयर में, एयर वॉरफेयर में. Well, war is an instrument of statecraft and economics. ये एक स्टेटमेंट है जो हमने बहुत अर्सा पहले पढ़ी थी, और ये अब इंतहाई ट्रू केटर हो रही है फॉर द प्रेजेंट डोमेन. दासू के हमारे पास भी जहाज थे और हैं, मिराज 3s and 5s which we flew. Rafale is an upgrade of it. It's still a Delta platform with a canard in front, but still Delta. So their romance with it continues. On the other hand, AVIC, which is the Chinese company जिसने चेंगडू में ये J10 और J10CE और उसका पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है, शेयर्स में बहुत फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है. एंड थिंग्स आर गोइंग अप एंड गोइंग डाउन. इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस बिल्कुल हो सकते हैं, कंसिडरिंग कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, especially the Western technology, and manufacturers and acquirers both. Now they are in a state of daze. अब स्टेट ऑफ टू माइंड्स के यार ये चाइनीज टेक लेनी चाहिए या वेस्टर्न टेक के ऊपर ही रहें, क्योंकि ये डिलेमा पहले कभी नहीं आया. अगर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में देखें, उधर भी वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी हैव गॉन फेस टू फेस, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में कभी कुछ नहीं आया. इट वाज ऑल शेड्स ऑफ ग्रे. इस skirmish में everything is loud and clear as a writing on the wall. The world will respond if not react to this variation. स्टॉक मार्केट में क्या ऊपर जाता है नीचे जाता है उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन बिल्कुल होगी, और द विलिंगनेस टू गो ओरिएंट और ईस्ट for air forces across the world will be, if not the factor, a factor in decision making of acquiring military or fighter technology right now. अच्छा, इसके अंदर इट्स इंपॉर्टेंट टू से कि पाकिस्तान ने जो जॉइंटली JF-17 प्रोड्यूस किया था वो बेचा गया, नाइजीरिया के अंदर इंटरेस्ट शो की गई, म्यांमार को जहाज कुछ दिए गए, और अब बात हो रही है कि शायद अगर पैसे अरेंज हो जाएं, चाइना $50 मिलियन फी एयरक्राफ्ट J-35A शायद पाकिस्तान को प्रोवाइड करे 40 की मद में, ओनली फाइनेंसिंग इज अरेंज्ड. Is this even possible? And if so, what does this mean? Okay, so there is a great game at play. The world order has been disturbed by this skirmish. I wouldn't say new world order, but I would certainly say that the convention that was there has been disturbed. Status quo has been lost by the West. अब इसके अंदर J-35 is a stealth 5, 6 generation, whatever generation, doesn't really matter right now. लेकिन कोई भी वेपन सिस्टम एक्वायर करना और उसको यूज करना और उसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स रिसोर्सेज, इट टेक्स एफर्ट. जहां पे अभी हम खड़े हैं, considering the capability of or the competency of the PAF versus the IAF domain, we are pretty well settled. J-35 जब आएगा, उसको मिलिट्री ऑपरेशंस में या इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ वॉर उसकी डॉक्ट्रिनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, बिकॉज दैट इज द ग्रैंड स्ट्रेटेजिक स्केल जिसको देखना पड़ता है किसी वेपन को एक्वायर करते हुए. देयर इज अ फ्रेज जिसको हम पढ़ा था हमने काफी अर्सा पहले, और इट स्टेट्स either it is a doctrine based technology or a technology based doctrine.
सो हमारे पास जो J-35 आएगा उसमें हमें डॉक्ट्रिनली देखना पड़ेगा कि उसकी यूटिलिटी कहाँ है और किस फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. Block 3, JF-17 right now is right there at the top with the J10C because of its capability in PL-15 and its handshake with the AWACS. F-16s that we have, we used that in the 2019 skirmish. ये नहीं है कि इस दफा इस्तेमाल नहीं हुए, बिल्कुल इस्तेमाल हुए, and they've done very well for the purpose that they were utilized for. So J-35 का आना immediate basis पे what purpose was they used for? air Sorry. to air. It was a pure air to air thing. They were utilized as a group, as I think I mentioned before. लेकिन ये सारे एक बैटल ग्रुप में ऑपरेट कर रहे थे. JF-17 Block 3, J-10 और F-16. They were all in the airspace. They were talking to each other through voice and data both. And it was all air to air. Air to ground में इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया, ना इरादा रखते थे हम इस्तेमाल करने का. So this is there. So J-35, yes. Long term, yes. Short term, I have my doubts on that. Especially after the success of the weapon systems or the aircraft that they already have. Moving forward, इंडिया ने कहा है, आखिरी सवाल, कि भाई ये एक न्यू नॉर्मल है हमारा. हम जब भी चाहें स्ट्राइक कर सकते हैं पाकिस्तान को, और आपके 24 बेसिस को उन्होंने डायरेक्टली टारगेट भी किया. जो एक शहादत हुई पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर की और एयरमैन की, स्क्वाड्रन लीडर भी थे वो, उस्मान मेरे ख्याल से नाम था उनका. वो भी जहाज या बेस के ऊपर मौजूद थे, ऑन द ग्राउंड थे जब आके मिसाइल हिट किया है. पाकिस्तान के पास एयर बेसिस तो हैं मगर इतनी स्पेस नहीं है, और अगर एयरफील्ड्स अटैक हो तो हमने देखा कि जी रोडों के ऊपर भी, हाईवेज के ऊपर उन्होंने टेम्पररी लैंडिंग स्पॉट्स बनाए हुए थे या टेक ऑफ के लिए. मूविंग फॉरवर्ड, क्या पाकिस्तान की फिलॉसफी में, डॉक्ट्रिन में इस न्यू नॉर्मल को लेकर कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत है? क्या वो तब्दीलियां हो सकती हैं? और क्या जो अभी सेटअप है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और प्रायोरिटाइज जिस तरीके से किया गया है, क्या उसके अंदर एक तब्दीली आने की जरूरत है? तो ये जो न्यू नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा समझने की जरूरत है. जो इन पूरी सिचुएशन के बैकड्रॉप में देखें ना, सो जितनी चीजें उन्होंने की हैं अभी तक, वो सब जो स्ट्रैटेजीज ऑफ वॉर और एयर पावर एम्प्लॉयमेंट है जो उन्होंने की है, दैट इज फ्रॉम द इजराइल डॉक्ट्रीन. they have believed, they have thought कि we are Israel, them, and Pakistan is Lebanon or Egypt, or for that matter, Palestine. We are not Palestine. We are not Lebanon, who does not have an air force, who does not have the capacity, competency to hit back. We have shown that so many times in the previous 4 days of this war. So, न्यू नॉर्मल उस जगह होगा कि जहां पे उनको रिटर्न इन काइंड नहीं मिलेगा. आई एम सॉरी, that is not the case. We have displayed that during the 4 days, जिस वक्त उनका अटैक रुकता था, our counter attack was ready, able and willing. चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी हो, चाहे वो सरफेस टू सर्विस मिसाइल कैपेबिलिटी हो, चाहे वो लॉइटरिंग म्यूनिशन में कैपेबिलिटी हो, चाहे वो यूएवीज की कैपेबिलिटी हो, स्वार्म ड्रोन्स की कैपेबिलिटी हो. सो न्यू नॉर्मल, अगर वो ये कह रहे हैं कि दे विल हिट अस विद इम्प्यूनिटी एंड देयर विल बी नो रिस्पॉन्स, sadly mistaken. It will be tit for tat as it has happened in the 4 days. And जहाँ पे दो न्यूक्लियर स्टेट्स लड़ती हैं ना, वहां पे आखिर जिस साइड पे भी हो रहा है ये, मतलब आई एम नॉट सेइंग वी विन, दे विन, वी लूज, दे लूज, the end is not good. The end is going to be
the utility of the red button. और जब वो रेड बटन यूज होता है ना, तो उसमें implications are not limited to the two states. It is the world at large. The nuclear winds will blast through borders and affect every country in the region, if not the world. So इस चीज को मैं ब्रोवाडो में जरूर लेके जाऊंगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी फर्क है. एयर डोमिनेंस, एयर सुपीरियोरिटी, जो हमने पहली रात को 3 राफेल गिरा के और बाकी जहाज गिरा के जनरेट कर ली, we were able to sustain that in pockets of resistance across the eastern border, or there was no air engagement after that. They were staying far away from the ranges that we had shot. अपने उन्होंने जो स्टैंड ऑफ वेपन स्कैल्प जो राफेल पे लगता है उसको इस्तेमाल किया फ्रॉम रेंजेस बियॉन्ड आर बीवीआर कैपेबिलिटी, बिकॉज दे न्यू that in the heart of heart के situation will turn or furball into something beyond their control अगर वो करीब आते हैं तो. They use the Brahmos on from the Su-30s and the surface to surface capability. बिल्कुल ठीक है, लेकिन वेपन तो दोनों तरफ है ना. फिर we have standoff weapon just like the scalp with the REK on the Block 3, Block 2, JF-17. We have it on the H4 with the Mirage 3s. We have the capacity to generate firepower. So air bases, agar wo they've hit, it is not that they've hit us only. We've hit them and we've hit them pretty bad. अगर आपने वो इंटरव्यू देखा हो, एक CNN पे आया था जिसमें ये स्पेसिफिकली जिक्र हुआ था कि भाई एट द पॉइंट इन टाइम बिफोर द 5 o'clock ceasefire or the 4:30 ceasefire, it was the Indian element that went to the American administration and said कि please ceasefire करवा दें. This was after the hypersonic attack that was done on the S-400 at Udhampur. हाँ, मगर वो कहते हैं कि वो तो कहते हैं कि S-400 तबाह नहीं हुआ था. पाकिस्तानी मेंटेन करते हैं कि S-400 तबाह हुआ था, और फिर अभी अब तस्वीरें भी जाके खिंचवाई हैं नरेंद्र मोदी ने. खैर, दैट्स कंटेंशियस, बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एयर डिफेंसेस का. दूसरी जानिब से ये भी सवाल होते हैं कि भाई जो पाकिस्तानियों को ड्रोन्स और ये म्यूनिशंस वहां से आर्टिलरी जो भेजी गई थी या रॉकेट्स या मिसाइल्स, उनकी इंटरसेप्शन क्यों नहीं हुई, इतने टारगेट्स क्यों हिट हुए. ट्रायंगुलेशन की बात भी होती है कि जी वो कामाकाजी ड्रोन्स भेज रहे थे देखने के लिए कि कहां से ओरिजिनेट हो रहा है आपका एयर डिफेंस. तो देयर आर लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू दिस. इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम बनता है मेरे ख्याल से. बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक सिर्फ इसमें एडिशन में कर दूंगा. एक कॉन्सेप्ट उसे कहते हैं RMA. RMA स्टैंड्स फॉर रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स. ये evolution जो है या revolution in military operations will not stop because the technology is changing so fast. Utility of technology in various modes will be there. अब फॉर एग्जाम्पल इस पूरे सिनेरियो में दोनों साइड ने लॉइटरिंग म्यूनिशंस UAVs का इस्तेमाल किया फॉर टारगेट डेजिग्नेशन, ओवरवेलमिंग द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑन बोथ साइड्स. अब उसको केटर करने के लिए एक इंटरनेशनल एरिना, बिकॉज आई कीप विजिटिंग कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स ग्लोबली, सो एक कॉन्सेप्ट और RMA है, उसको कहते हैं CUAS, विच इज काउंटर UAS टेक्नोलॉजी. ये कमर्शियल और मिलिट्री साइड दोनों साइडों पे इक्वली इफ नॉट मोर एप्लीकेबल ऑन द मिलिट्री साइड है, बिकॉज चाहे वो S-400 है, चाहे S-500 है, चाहे HQ-9 है, चाहे S-300 है, चाहे पैट्रियट मिसाइल बैटरीज हैं, चाहे वो स्कड है, जो भी आप कह लें उसको, it has a limitation. Iron Dome in Israel was overwhelmed by the projectiles of Iran, and they used the Allied Air Force. अगर वो ना करते तो इजराइल में काफी तबाही मच सकती थी. सो कन्वेंशनल एयर डिफेंस, नो मैटर हाउ इंटीग्रेटेड इट बिकम्स, उसको केटर करने के लिए काउंटर UAS टेक्नोलॉजी को साथ चलाने की जरूरत है.
और वो उसके अंदर EM स्पेक्ट्रम है, यू कैन यूटिलाइज एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. सो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड वी हैव टू बी द चेंज, नॉट रिएक्ट टू इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई थिंक कि ये भी एक फाइनली अब आखिरी सवाल है, मुझे पता है बहुत टाइम आ रहा ज्यादा हो गया है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म ऑफ पीएफ की बात होती है और ये एवीएम औरंगजेब बैठे हुए थे, तो अब एक मेरे ख्याल से थोड़ा जरा हल्का सा जाते जाते थोड़ा इसके ऊपर भी तबसरा कर लें कि प्रोफेशनलिज्म ऑफ द फोर्सेस एंड औरंगजेब के ऊपर बड़ा एक उनको बढ़ाया गया चढ़ाया गया, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कंपेयर करें अगर आप नेवी के ही बैठे हुए थे, आर्मी के ही बैठे हुए थे, ये एवोल्यूशन और दिस आइडिया ऑफ कांस्टेंट चेंज एंड रिस्पॉन्डिंग एंड लर्निंग अडेप्टिंग टू इट एज अपोज्ड टू रिएक्टिंग, तो औरंगजेब की कारकर्दगी और उनको जो अब लाइनाइज किया गया है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? AVM Aurangzeb is a professional guy. We have flown together at a few places once I was in service. Thorough professional. I wouldn't say the rest of the team was not. I would also not say that the Indian presser was not professional. I would certainly say that he was a notch above. उनकी प्रेपरेशन और उनका जो डिलीवरी स्टाइल था टू प्रेजेंट समथिंग विच वाज सो कॉम्प्लिकेटेड कि जब एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी बैठते हैं ना तो दे टेक टाइम टू एब्जॉर्ब के इंफॉर्मेशन क्या आ रही है. सो ही वाज एबल टू मेक थिंग्स simple for everyone who was in the press brief. That is one. Another element which is critical here कि पूरे सफेर में majority operations एयरफोर्स के थे दोनों साइड पे, हमारी साइड पे भी और उनकी साइड पे भी. अब जितने सवालों के जवाब आप अगर प्रेस नंबर वाइज काउंट भी करें तो जितने सवालों के जवाब हमने दिए इन आर प्रेस ब्रीफ और जो इंडियन प्रेस ब्रीफ के अंदर जो उन्होंने जवाब दिए, आई वुड से देयर इज अ डिफरेंस. नंबर एंड क्वालिटी बोथ. ये कह देना कि एट्रिशन और लॉस इज अ पार्ट ऑफ वॉर, ये तो सबको पता है. फर्स्ट रूल ऑफ वॉर पीपल डाई, सेकंड रूल ऑफ वॉर द ट्रूथ डाइज विद देम, सबको पता है. लेकिन हाउ डू वी मैनेज द प्रेस ब्रीफ विद द conviction and the belief that AVM Aurangzeb generated in those few question answers that were done afterwards. क्योंकि किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी ब्रीफ के अंदर ना जो चीजें वो बता रहे होते हैं वो तो प्रिपेयर्ड होती हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता बिकॉज दे हैव रिहर्स्ड, practiced, done it so many times over and flown with him as his number two and a few more places as his student as well. I would say he was every time prepared, but he was more prepared for the answers to the questions. And that is what made the difference between the press, our side, and the other side. It's a good segue. Thank you so much, Fahad Masood. Fahad Masood, former squadron leader, Pakistan Air Force, joining us and telling us about this remarkable, तो कह सकते हैं ऐसे मेरे ख्याल से, BVR बैटल जो हुई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान. तो ये थे फहाद मसूद. आप क्या समझते हैं कैसा रहा पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान ये जो झड़प हम इसे कह रहे हैं, रिमार्केबल झड़प ही सही, बताएं कमेंट सेक्शन में. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट. अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज.